Good evening, good evening, good evening, guys. I hope you are doing good. I'm also good. Now we are going to start with today's session with Accounting Standard 29. You can see here, this is a provisions, contingent liability and contingent assets. But before starting any standard, yes, first we have to revise all names of the accounting standard. I hope you remember all names of this accounting standard. So what is S1? Yes, let's start with the S1. Accounting standard 1 is disclosure of accounting policy. S2 is inventory value, cash flow statement. S4 contingencies and events occurring after balance sheet date. S5 is net profit or loss for the prior period items and changes in accounting policy. 6 number is removed and 7 number is construction contract. 8 number is removed. 9 number revenue recognition. 10 number is property, plant and equipment. Effects of changes in foreign exchange rate is the 11 number. 12 number government grant. 13 number accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 employee benefits. 16 borrowing cost. 17 segment reporting. 18 related party disclosures. 19 leases. 20 earning per share. 21 consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 is investment in associates in case of consolidated financial statement. 24 discontinuing operation. 25 is interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 investment in joint venture in consolidated financial statement. 28 is impairment of assets. 29 is provision, contingent liability and contingent assets. So effective standards, you are aware that total 27 standards which are effective till now, and this is all for your syllabus. Okay friends, any difficulty till now? Yes, today what we are going to see, we are going to just revise first S29. Sir, good evening. I have a question related to impairment of assets for TYK. You saw in the class. May I ask? Yes, beta. Ashish. Okay. Sir, good evening. अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. उस दिन थोड़ा सा ट्रीटमेंट की वजह से बेटा सेशन मैंने 15 मिनट जल्दी छोड़ा था. आज तो जितना हो सकता है पूरा करवा लूंगा. S29 and today we are going to start with S15 also. So last का सेशन might be, I will ask कि मुझे एक ही सेशन बस हो जाएगा 15 के लिए और 1.5 सेशन. तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. So I will ask board of studies. Okay. Yes, sir. I read the chapter. I have doubt in 2 topics. That is the decision tree and expected disposal of asset. No problem, beta. No problem. Yes, we'll see that. और कुछ गुड इवनिंग बेटा. किरण जी, गुड इवनिंग. माधव तिवारी, दिव्या, मोहम्मद जी, मोनिका जी, अजय चौहान, मोनिका, संकारन जी, गुड इवनिंग. नेहा, चलो जल्दी से गुड इवनिंग इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट ज्वाइन हो जाइए. 6 o'clock हो चुके हैं और संगत सर आ चुके हैं. ओके, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. जल्दी. यस, ज्वाइन क्विकली. यस, दीपश्री जी, अभी तबियत बहुत अच्छी है बेटा. और कुछ नीनाथ देसाई, चलो जल्दी से गुड इवनिंग बोल दीजिए बेटा, अच्छा लगता है. ओके, चलो. सो in last session we have finished with the provisions. Okay, provision. Lokesh ji, yes, good evening beta. Avinash, Ranjana, good evening. Chalo, provisions we have finished in the last session, and after that we have started with the just all illustrations, and I have given you some illustrations up to I think illustration number 12 we have covered, and today we are going to see some different illustrations. From where to download it? Yes, our dear institute issues accounting standards in resources that I will show you from where to download it. Okay, and today we are going to discuss some questions which are given by our institute, not in our study material, but today we are going to see bare text beta, bare text. Okay, तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का बेयर टेक्स्ट देखने वाले हैं. आज क्या करने वाले? बेयर टेक्स्ट देखने वाले. ओके, चलो सर, आज आप फुल एनर्जी में हो. यस बेटा, आज तो फुल एनर्जी है. इंट्रोडक्शन एंड स्कोप. ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोविजंस and decision tree. What is decision tree? That we are going to see today. And disclosures. माधव तिवारी की एक कमेंट है, सर आप ज्यादा हैंडसम हो गए हो ट्रीटमेंट करवा के. थैंक यू बेटा. ओके, चलो. सो apply appropriate what? Recognition criteria. What we are going to see? Recognition criteria and मेजरमेंट बेसिस. तो मेजरमेंट बेसिस भी हम लोग देखने वाले. एंड
प्रोविजंस फॉर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट बेस, ये दो चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बेटा? आज दो चीजें देखने वाले। एक हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और दूसरा व्हाट इज द मेजरमेंट बेस। ओके, चलिए। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, scope of accounting standard 29 is applicable except resulting from financial instruments carried at fair value. Okay, because financial instrument, it is a big ocean, beta. It is a separate accounting standard that we are going to see it in the CA final. Indes 32, 107 and 109. So friends, today we are not going to discuss about the financial instrument mein how you are going to record the recognition of your liabilities, provisions, contingent liabilities and contingent assets. So resulting from financial instruments which are carried at fair value, don't worry beta, S29 is not applicable to financial instruments. Okay, next one, which are carried at fair value. Now there are some concepts which are called as, okay, amortized cost and fair value and through OCI. But beta, yes, I'm going to teach you at CA final level, so don't worry, you will see it at CA final level. Okay, now arising insurance contract, sir, insurance contract, it has a separate guidelines, IRDA. Oh God, in accounting standard 7. How many methods are there? Yes. Can you tell me to record the revenue? How many methods are there? Yes. Anyone who will tell me how many methods are there for recording your construction contract income? How you are going to record revenue? चलिए, so definition part, sir, definition part रट्टा मार बोला था ना मैंने, by heart for definitions for provisions and contingent liabilities. So today we are going to see one definition which is called as executory contract. Now what is executory contract? Sir, tell me example of executory contract. Contracts under which network is low, my network is low. Check it. Network lagging only for Divya Kumari, I think. So whether it is from your side, Divya ji, and I think there is problem again. It's okay ना, नेट है, ओके, ठीक है. So again, some region they are facing problems बेटा. Okay, मानसी जी पूछ रहे हैं आप मेरे से गुस्सा हो क्या? क्यों गुस्सा होऊंगा बेटा मैं आपसे? नहीं, डोंट वरी बेटा. Contracts under which neither party has performed any obligation or both parties have performed, partially performed, in that case, their obligation to an certain extent, equal extent, not certain extent, equal extent. See, beta, this definition is important. Why executory contract is important, that we are to see. Okay. ठीक है. So now, beta, if neither party, now why executory contract is important? Green color. Book. Okay. So neither party has performed any obligation. एक ही मिनट बेटा. So कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट टाइम. 1 minute only. एक ही मिनट मैं सामने से बेयर टेक्स्ट लेके रखता हूं.
ओके, ठीक है. Executive contract, yes, same definition is there. So, if contract under which neither party has performed any obligation and nor what both parties have partially performed their obligation to a certain extent or equal extent. Provisions. Provision definition is very important. Rattamar definition the a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is called as. See beta, provision ka definition is very important. Okay, this is just quick revision. Liability is a present obligation that arises from the past event, the settlement of which is likely to result in the outflow. Okay, so this is a definition of resources embedding economic benefits. This is a definition. Now, what is obligating event? Event that creates an obligation that results enterprise having no alternative than settle it. Okay, so obligation means sales. Warranty के केस में you incurred beta. You have past event sales and that's why your obligation to provide warranty. Okay, so obligating event क्या होगा? Sales is a obligating event. Sales is an obligating event. Okay, चलिए next. So obligating event तो आपको समझ में आया. A possible obligation that arises from past event whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Friends, today we are going to see contingent liability in detail. Contingent liability in detail. Okay, chalo, open your 100 pages book. 100 pages book को open करो बेटा. जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. Okay, I'm going to give you contingent liability. Definition. Number one. So write down with me. Write down with me, beta. ठीक है, मेरे साथ लिखो. It's a possible obligation. Possible obligation. Existence is confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future events not controlled by entity. Over beta. Okay. Possible obligation, existence of which is confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future events not controlled by entity.
present obligation, but cannot be recognized as provision reason future economic benefit outflow is not probable. So this is, if probable, then this is a provision, and not probable, then this is a present obligation. And second one, amount cannot be measured Write down definition. Over beta. Yes. Yes, beta. Now I'm giving you example of present obligation and possible obligation. Have you done with this? Over? Yes, done. See beta. Now remember, what is the present obligation, possible obligation, and present obligation? See some examples. Now from where to download these examples? Yes, beta. I will show you from where to download. चलो गूगल में आ जाओ बेटा. BOS, no, ICAI.org, ICAI.org beta, Institute of Chartered Accountants of India. In that, resources, you can see here, upper resources. In resources, we have accounting standards. Okay.
accounting standards as on July 1, 2019. And that beta download it as and you can search S29. Page number page number 3. This will example page number 383. This diagram is very, very important, and even in your study material, I think the same diagram is there. Yes, everyone understood from where to download? Okay. Chalo. Yes, beta. Nagarjun. Onerous contract is different. Yes, beta. We are going to see what is onerous contract. Don't worry. Okay. Sangeeta ji. Start is like, you know, क्या होता था हमें decision tree diagram. In Inter, we had that in information technology subject, that decision tree, start, end. Okay. So start. First ask to yourself, whether present obligation as a result of obligating event? If yes, then ask to yourself, whether probable outflow, that is 50% or more chances? Yes. Is reliable estimate can be made? Yes. Then provide it. Okay, we are going to see some examples. Don't worry. If no, then ask to yourself, whether possible obligation? Yes. Remote? No. It is the disclosure of the contingent liability. If present obligation there, probable outflow? No. And remote also no. Then also contingent liability. This diagram is a definition. ये diagram ही अपनी definition है. आपको definition याद करना नहीं होगा, तो ये diagram को याद करो. This diagram will definitely give you 100% answer about provisions, contingent liability, and contingent assets. See, yes बेटा, हिंदी में भी बताऊंगा, don't worry. हिंदी में भी बताऊंगा. And once you got this all questions, आज लाइक बटन तो बनता है बॉस, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिमाग में डाल दिया. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, some illustrations will give you idea. I think some examples we already covered, and these are really very beautiful examples which is given by our dear institute. If you understand these examples, nothing to worry about. This is bare text example. From where you will get all these examples? Bare text ICAI.org ki site se you will get this, and this example will give you 100% idea about this accounting standard. I will go very slow
very slow for this accounting standard. Today, if we finish with this accounting standard without break, I will leave you early. If you say no sir, we need a break, तो फिर ठीक है. Okay, आज ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म करेंगे and then without break बेटा continue करेंगे. Okay, so only 19-20 questions are there and once you got all these questions, तो बेटा ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा. We won't start with the new standard then. Tomorrow we'll start with the new standard. Okay, let's see how much time it takes. ठीक है, चलो चलो चलो. First question. Read carefully. Read carefully. आज सैटरडे तो क्या आज क्या कम बचेगा. एंड प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन. टुमारो टाइमिंग देख लो एक बार, क्या है मुझे बताओ जरा. टाइमिंग भी देख लो एकदम एक बार चेक करो. मॉर्निंग है या इवनिंग है. टुमारो वी हैव अ सेशन ऑफ बॉस. रिमोट मीन्स नो चांसेस बेटा. अनमोल रिमोट मतलब क्या. आई विल एक्सप्लेन यू. रिमोट मतलब बहुत रेयर चांसेस. रेयर बहुत कम. क्या टाइमिंग है कल का. मॉर्निंग इवनिंग. No, but it is not necessary to study. Bare text. A manufacturer gives at the time of sale to purchaser of its product warranty देना. A manufacturer gives warranties at the time of sale. Under the terms of the contract for sale, the manufacturer undertakes, okay, to make good by repair or replacement or manufacturing defects that becomes apparent within 3 years from the date of sale. On past experience, it is probable that there will be some claims. Please don't open this material. I just want to improve your ability of understanding. मुझे आपका level of understanding बढ़ाना है. So कोई भी आंसर नहीं देखेगा. Now you ask to yourself. See this diagram every time. Present obligation as a result of obligating event. क्या वारंटी देना ये आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है. ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज अ सेल्स. वंस आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी. डोंट वरी. आस्क टू योरसेल्फ व्हाट इज ऑब्लिगेटिंग इवेंट. ऑब्लिगेटिंग इवेंट. व्हाट इज ऑब्लिगेटिंग इवेंट. ऑब्लिगेटिंग इवेंट हिंदी में बताता हूं. ऑब्लिगेटिंग इवेंट मतलब जिसके वजह से आपको कुछ देना पड़ेगा. ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज माय ऑब्लिगेटिंग इवेंट बेटा. माय मैरिज. एग्जाम्पल. व्हाट इज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट. मैरिज. एंड व्हाट इज द ऑब्लिगेशन. टू टेक केयर ऑफ माय वाइफ, his father and mother. Sorry, her father and mother. Okay. So, friends, my wife, her father and mother, beta, my laws, in-laws, beta, are my obligations. So, what is the obligating event? Sales. Sales is my obligating event. Okay. Yes. Here. Sales is the obligating event. And what is the present obligation? Past event is sales. That is obliged. जिसके वजह से आपकी liability आएगी. Okay. Obligating event means it's your liability will be there due to that event.
So sales is the obligating event. And what is present obligation? That you have to pay warranty. Probable outflow? Yes. 50% more chances to pay. So yes, probable outflow. And reliable estimate can be made? Yes. Reliable estimate can be made. So then you should make a provision for warranty. Now it's simple. Now tell me whether it's simple. If you go by this diagram, is it simple? Yes. Warranty is obligation. Warranty is obligation. C. Present obligation. See, ICAI, how beautifully they wrote in the bare text these answers. They have divided in 3 parts. Present obligation as a result of past obligating event. The obligating event is sales. The product with warranty, which gives you present obligation. And outflow of resources, economic benefit, probable. Means more than 50% chances are there. I will pay from my pocket. Conclusion. A provision is recognized. Why provision? Because you exactly don't know the amount, otherwise it's a liability. Okay, you don't know exact amount, therefore it is not a liability. It is substantial degree of estimation. Substantial degree of estimation. See, these words you have to write it in the exam. Okay, this will carry marks. Only if you write, is it a provision? 0 mark, 1 mark maximum. वो भी रहम में दिया जाएगा. Okay, you just beg for marks and that way he will give you that marks. Okay. So if you want full marks, so you have to write in the proper language. Okay. Chalo. So provision is recognized. See the definition. How to write the answer? In the same way you can write this answer. You can write the definition of provision. I already explained you. Rattamar definition is there. And then you will write this definition. Okay. See, एक बार हिंदी में बता देता हूं. क्या होगा हिंदी में? बेटा आपने किया था सेल किया मतलब क्या किया? आपने सेल विथ वारंटी किया. आपने क्या बोला कि भाई तुम लोग मेरे से, मैं ये माल बेचता हूं, जब भी आपको लगता है आप क्या करना, माल ये जो है आपको सपोज ये 2-3 साल में खराब हो गया, तो बेटा क्या करना, यस आप मेरे से ये रिप्लेस कर देना. आज की बात है. आज थोड़ा आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट्स लाए क्योंकि अभी फाउंडेशन की बैच जल्दी से स्टार्ट हो रही है. यस, टेल टू योर फ्रेंड्स, डोंट मिस डे आफ्टर टुमारो सेशन. इफ यू वांट टू इंप्रूव योर अकाउंट्स, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्लीज डोंट मिस इट. ओके, फाउंडेशन अकाउंट्स के पहले 2 चैप्टर जो आपकी दुनिया बदल देंगे. ओके, दैट विल चेंज योर लाइफ. सो आई रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स 11 to 1 we are starting with foundation batch. You can attend first 2 chapters which will definitely improve your basics. Okay, and tell to your juniors also. Okay, so Sanket sir abhi Monday ko milne wale hai foundation students, or okay direct entry students can attend first 2 chapters for 8 to 10 days. Beta will definitely help you out to improve योर अकाउंटिंग नॉलेज. ओके, तो जो भी बच्चा बेटा एक बार सुन लो कि जो भी मेरे डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स है, प्यारे स्टूडेंट्स कि जिनका बेसिक जो है ना फाउंडेशन में हुआ नहीं है, तो आप लोगों के लिए एकमात्र इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फायदेमंद सेशन जो होने वाला है शुरू मंडे से 11 to 1. और आप आपके जूनियर्स को भी बता सकते हो कि संकेत सर और बीओएस ये दोनों भी आपके लिए आ रहे हैं मंडे से 11 से 1 बजे. डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका अकाउंट्स यदि आपको बेसिक से इंप्रूव करना है तो मंडे से हमारे साथ जुड़ जाइए. ओके, तो कहां पे थे हम लोग? एक बार हिंदी में बता रहा था मैं. पूरा सेशन आप ही लेने वाले हो. मतलब कौन सा सेशन बेटा? आज का सेशन. यस, आज का सेशन तो मैं ही लूंगा.
एंड फाउंडेशन का, हाँ जी बेटा, पहले 2 चैप्टर तो मैं ही लूंगा, बाकी तो बदलती रहती इंस्टीट्यूट फैकल्टीज। ओके, तो कहां पे थे, हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यस, चलो मंडे का तो बता दिया सबको। आप ये वापस से आ जाइए ट्रैक पे, हिंदी मीडियम वाले आ जाइए, ध्यान दीजिए। तो ये देखो, ये आंसर कैसे लिखना है, इससे ही बढ़िया आंसर लिखना है। सबसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछना है कि मेरा ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है। सर मैंने माल बेचा, यही तो मेरे के लिए क्या हो गया, मैंने माल बेचा, नहीं होता तो मुझे वारंटी देना पड़ता था क्या? नहीं नहीं, मुझे वारंटी नहीं देना पड़ता था। तो सबसे पहले मुझे क्या आया, ऑब्लिगेशन किस लिए आया, क्योंकि मैंने माल को बेचा। भाई माल बेचने के बाद क्या हुआ, माल बेचने के बाद मैंने सामने वाले को बोला कि भाई 2-3 साल में जो भी आता है, यस संकेत सर का गारंटी का, वारंटी का माल है, गारंटी का नहीं बोलेंगे, वारंटी का माल है, कुछ भी डिफेक्ट आता है आ जाइए करवा दूंगा। ओके, तो यस मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है माल रिप्लेस करके दे दूंगा, वारंटी आपको दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने वारंटी दे दिया 2-3 साल के लिए, पर मुझे पता नहीं आप लोग मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे, कब आओगे, यदि माल खराब निकला तो। 100 में से कितने प्रतिशत, मुझे मेरे एक प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, क्यों आपको नहीं है? यस कॉन्फिडेंस है, तो 100 में से 3% लोग मेरे पास आने वाले हैं कि सर ये चेंज करवा दीजिए। ओके, सो ये प्रोविजन मुझे भी पता नहीं ना एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, और मैं ये माल आज बेचा है, तो बड़ा ऑब्वियस यहाँ पे कॉन्सेप्ट होती है, कौन सी कॉन्सेप्ट होती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस साल में माल बेचा उसी साल में प्रोविजन करना पड़ेगा, उसी साल में प्रोविजन करना पड़ेगा, फ्यूचर को एस्टिमेट करते हुए एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को साथ में लेके हुए कि एंटिसिपेटेड लॉस आने वाला है तो क्यों रिकॉर्ड नहीं करोगे। और ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जुड़ जाइए मंडे को 11 से 1। ओके, सो वहां पर कितनी एडवर्टाइज कर रहे हो सर, हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 यहाँ पे वारंटी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सेल्स हो रहा है उतना ही प्रोविजन करना पड़ेगा, सेल्स हुआ उतना ही प्रोविजन करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे हिंदी मीडियम वाले पूरा समझ गए क्या? हाँ जी सर, पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो सेल्स इज अ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट which gives you warranty provision and amount is not known exactly, probable, but we have to pay that 50% amount and therefore a provision has to be recorded. Clear with the concept? अरे वाह, रोहित माई ने एक डायलॉग मार दिया इधर हिंदी में, संकेत सर बी लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाओ, इजी है करवा दूंगा। ओके बेटा, हाँ चलिए। तो फर्स्ट वन वी हैव फिनिश विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। आस्क टू योरसेल्फ वेदर दिस इज ऑब्लिगेशन और नॉट। चलो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। इंग्लिश समझ में नहीं आया तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, डोंट वरी। कर कर कर। यस बेटा, एज 29, contaminated land. Okay. Yes, Hemlata ji. Studied in the last session, sir, only. We have studied already this in the last session. You already explained this. An enterprise in the oil industry causes contamination, means pollution. Okay. सन क्या बोल सकते,
प्रदूषित करना. ओके, आप लोग इसको खराब कर दिया. So here, the example solved in the study material is same. Yes, sir. Yes, sir. Same. Causes contamination but does not clean up because there is no legislation for cleaning up. No legislation. And the enterprise has contaminated land for the several years. And it is virtually certain law requiring the cleaning up. Sir, last session we already solved, na? This example which is given by the bare text, we already solved in the last session. So what is the answer? What is the obligating event, sir? Obligating event is you have done the contamination of the land. Land को खराब कर दिया, प्रदूषित कर दिया. Okay. Because of virtual certainty of legislation. Virtual certainty मतलब क्या? कि अभी लॉ कंपल्सरी चालू होने वाला है, मास्क पहनना चालू हो गया. सो दिस इज द वर्चुअल सर्टेनिटी दैट मास्क हैज टू बी, यस यू हैव टू वेयर दिस मास्क. सो दिस इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी. अदरवाइज लॉ फाइन व्हेन कोरोना वाज देयर, तो बेटा दैट इज द वर्चुअल सर्टेनिटी. ओके, सो इफ एनीथिंग is going to implement in the future, and virtually certainty means sure shot government will apply. Okay, so this requires the cleaning up. Okay, how to answer it? Obligating event क्या है भाई? Contamination of the land को खराब कर देना. और law ये virtually certain है, तो उस केस में क्या होगा? Outflow, yes, probable. डेफिनेशन. सो कंक्लूजन. चलो तो क्या है देखिए. आ जाइए वापस से अवर ट्री डायग्राम. आस्क टू यूर सेल्फ, present obligation, yes, I have to clean up that land. Why? Because this is the obligating event. What is the obligating event? That you use that land and you contaminated that land. Okay, so that will be the contamination of the land is the event. And what is the probable outflow? Probable outflow, yes, there is a 50% more chances that you are going to incur that loss. And reliable estimate can be made. I know what is the amount that cleaning up के लिए कितना amount लगेगा. So I know the amount, and therefore you will provide. Say yes. Now this definition works. This definition works. This diagram works, beta. This diagram works. This decision tree works. Okay. So ये काम में आया सर. ये decision tree पूरा knowledge हमें दे रहा है. क्या बात है सर, क्या बात है, पूरा ध्यान में आ गया. So sir, answers in the bare text look more good and simple. Can we present in the same way? ऋतुराज क्यों नहीं present कर सकते हो? Same answer you can present it in the exam. Same way you can present. Yes. चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3. Are you enjoying today? You understood these definitions? You think this standard will give you 100% marks? 4 marks तो लेके आओगे कि नहीं? चलो, offshore oil field. Offshore oil field. Let's see how many of you can answer it. Don't refer answer. Don't refer answer. Okay. Just tell me, apply your mind and tell me the answer. Full screen कर दीजिए सर.
चलो, time up. Okay, sir, explain it. Offshore oil field. समंदर किनारे पे एक लगा है ऑयल फील्ड. ओके, ऑफशोर ऑयल फील्ड, समंदर किनारे पे. So today morning I got one call from my student. He is really very intelligent guy. He scored 54 marks in law, in foundation, in account 76, in math 65, and in eco BCK 97 marks. And he told me one point, sir, I'm strong in numbers. I'm strong in numbers, but up to 10 standard, he was Hindi medium student. So he found problems while writing theory in 11-12. And same problem continued. But friends, if you open dictionary and if you try to learn these words one by one, okay, it will be very easy for you. So Hindi medium students, don't worry. If you have to give paper in English, and if your English is average also, doesn't matter, you will definitely score good marks in your tax paper, GST paper, or law paper also. One example is in front of you. Okay, Sanket sir, from vernacular medium. Okay, but see the confidence. Confidence is very important in your life. And remember, if you have confidence in writing and in speaking, your personality, beta, doesn't matter which medium, whether you are 100%, conceptually clear, 100% good in English or not, doesn't matter. Okay. So your confidence is very important in your real life also. So Hindi medium students or even state board students. Oh, yes. Nowadays, beta, no one means, I know now English medium is only there. But those students who are from vernacular medium, don't worry, beta, even from South. So see, you must have confidence on yourself while speaking or while writing the paper. And it doesn't matter your vocabulary is 100% or not, but you will become CA one day. Okay? Chalo. See, offshore oil field, an enterprise operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig. Okay. ऑयल रिग मतलब वो जो उनका क्या बोल सकते हैं, मशीनरी जो होगा या ऑयल के लिए जो खींचने के लिए जो भी उनका यंत्र सामग्री बोल सकते हैं वो रहेगा. सो दैट विल बी, जो भी है वो आपको एंड में रिमूव करना है. ओके. सो ऑफशोर ऑयल फील्ड where it licensing agreement requires to remove the oil rig at the end and restore the seabed. और उसको अच्छे से आपको वापस से जैसी कंडीशन में सीबेड था, वो किनारा था, वैसे करके देना है. ओके. 90% of the eventual cost relates to removal of the oil rig and restoration of the damage caused by building it, and 10% for extraction of the oil. Okay. So whatever cost, 90% cost is for restoration and 10% for removal of the oil. Extract मतलब खींचना, oil को खींचने का है. At the balance sheet date, the rig has been constructed, but no oil is extracted. No oil is extracted. See friends, if oil is not extracted, then are you going to ask for that 10%? No. Here, you ask to yourself, what is the obligating event? Obligating event is that you constructed that oil rig. Construction of the oil rig creates the obligation. Okay, sir. So obligation is important.
ओके अरे वाह राहुल जी, क्या हिंदी है आपका, मस्त एकदम. Under the terms of the license to remove the oil rig. So license is asking for you to remove the oil rig and restore the seabed. Seabed को restore कर दो. And thus it is the obligating event. Yes, but obvious. And the balance sheet date. No obligation to rectify the damage will caused by the extraction of the oil. So no obligation. I have not extracted the oil. I won't pay 10%. So no obligation for 10%. But other 90%, yes. Chances more, 50, more than 50% chances. You have to pay. So here, provision is recognized for 90%. How many percentage, beta? 90% you will record for the eventual cost and for the removal of the oil rig and restoration of the damage. These costs are included as a cost of the oil rig. The 10% you recognize the liability only when oil is extracted. Okay, see the answer. Institute has given it clearly. You will make a provision only for 90%. Don't make a provision for 10%. Okay, easy. अरे इजी क्या. लोकेश अच्छी है तबियत बेटा, डोंट वरी. एकदम मस्त है एक आज. तुझे लग नहीं रहा है क्या मेरे देख के आज कुछ फ्रेश हूं मैं परसों से तो. हो गया क्या बेटा. और समझा क्या. चलो जल्दी बोलो इन कमेंट सेक्शन. टेल मी इजी और डिफिकल्ट. इजी और डिफिकल्ट बेटा. टेल मी फास्ट. चलो आगे जाना है. इजी. रिफंड पॉलिसी. A retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customer, even though there is no legal obligation. So no legal obligation means which obligation, beta? Please recall that word. Either legal obligation or which word, beta? Legal obligation or second word? No legal obligation or second word. Who is answering very fast? If there is no legal obligation, then second obligation is. क्यों इतना स्लोली आंसर आ रहा है. So second obligation is, yes, who wrote very fast? Anmol Bhav. Constructive obligation. अरे वाह मेरे अनमोल. Present obligation as a result of past event. The obligating event is sale. Same answer. And though it is not obligation, but it is a custom to maintain the good business relationship. And you can use the word constructive obligation. It is called as good business relationship is constructive obligation. Constructive obligation. And whenever there is a constructive obligation, a provision has to be recorded. अरे वाह. सब मेरे शेर शेरनी. राम ने भी आंसर दिया, अपर्णा ने आंसर दिया, पूजा, शगुप्ता, जय भाव, वेरी गुड. कादम्बरी जी, मोहम्मद जी, मुक्तेश्वरी. चलो, सो कंक्लूजन, प्रोविजन हैज टू बी मेड. ये हो गया था. दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी कवर्ड. फिट स्मोक फिल्टर्स. यस, तो ये क्वेश्चन हुआ था. चलो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 6 नंबर. यस, डोंट रेफर आंसर. चलो. Read this question and answer it fast. Yes, अभी मजा आएगा.
अभी मजा आएगा. Let's see how many of you can answer it. Now these questions are not covered in the last session. Yes, beta. So what will be the answer? The government introduced. Yes, what is your answer? Management, beta. Management. Krishna management and CA will help them. No, beta. Just no need to give answer like yes or no. We have to see the reason behind it. Okay. See, the government introduced a number of changes in income tax system, but obvious. Yes, amendments are always there and it's good. As a result of these changes, enterprise is the financial service sector will need to retrain the large proportion of its administrative and sales workforces. Oh, need training to existing employees in order to ensure continued compliance with financial service regulations. Okay. At the balance sheet date, no retraining of staff has taken place. Okay. See, beta, can I control my employees? Can I control? No, beta. One of my employee, he takes holidays whenever he wants. Okay. I do not have any control over him. And he always give me excuses. Okay. So I cannot control my employees. 3 days in a week is also very difficult for him. Okay. So present obligation, I cannot control him. I cannot control my wife. So he's my employee. How can I control him? Okay. So present obligation as a past event, no obligation because of retraining. Okay. हाँ. बड़ा
प्रोबेबली कंट्रोल योर एम्प्लॉय बोल रहे हैं माधव। भाई कौन भाई, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, कहां से, कुछ भी। ओके, एक चार्जर दे रहे तेवढं, मोबाईल नहीं है। हाँ, ओके। तो बेटा, कुछ तो समझ में आया होगा आपको। सो सबसे इंपॉर्टेंट, सो फॉर ट्रेनिंग कॉस्ट व्हाई शुड आई गिव हिम ट्रेनिंग? ओके, yes Madhav, you are taunting to your employee. Yes beta, you are very intelligent guy. Okay, so here there is no obligation because no obligating event retraining has been taken place, and since no obligating event, then there will be no provision. Simple. There is no provision. No obligating event, so no provision. It's very simple. And reason is very simple, that you cannot control your employees. So retraining is not a provision that you should make. Okay. So there is no obligating event. Yes, this example explains through it. Yeah, sir, please. नेहा जी, क्या बोल रही हो आप? मराठी में, हिंदी में बताओ? तो नेहा जी, आपके लिए एक बार हिंदी में बता देता हूँ। एक समझ लीजिए कि नेहा जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं मेरे एम्प्लॉयज को रिट्रेन छोड़ो, ट्रेनिंग छोड़ो बेटा, उनको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बेटा, इनका ठेका तो नहीं लेके रखा हुआ है कि मैं उनको सिखाऊंगा। वो खुद से सीखेंगे भाई। बच्चे को चलने के लिए हम लोग सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, चलना तो उसी को है एट द एंड। तो एम्प्लॉयज को जब ट्रेनिंग देना है, हाँ भाई ये हम लोग बताएंगे, पर मैं कंपल्शन नहीं कर सकता हूँ। तो काय को प्रोविजन करूं मैं उसकी? मेरे ऊपर थोड़ी ऑब्लिगेशन है उसको ट्रेन करके उसको सिखाओ। सीखना है तो सीख, नहीं तो तेरा पगार में कटौती होगा, मुझे क्या करना है? ओके, सो ये चीजें जो है, हाँ इमोशनल अटैचमेंट तो है ही, नो डाउट इन दैट। पर एक क्या होता है कि भाई हाँ, कितना सहन करेगा ना इंसान। तो कभी ना कभी वो ट्रेनिंग खुद ले लेगा और खुद ही करवा दूंगा। मेरे एम्प्लॉयज बेटा बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे ही उनको ताने मारता रहता हूँ, और वो बहुत मेरे लिए कुछ भी करते हैं, मुझे पता है। सो नो डाउट कि उनके हिसाब मैं खुश हूं कि वो एटलीस्ट मुझे कभी भी कहाँ पे भी मैं गया तो भी मुझे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दिन पहले मुझे मिल जाती है। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। पर हाँ, कभी कभी थोड़ा पागल जैसा करते, वो बात अलग है। ओके, माधव तिवारी जी है एनआरओ के, और इनको चाहिए मराठी में एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इनको मराठी सुननी है। भाई मराठी अच्छी है बेटा। चलिए। नो बेटा, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर है। चलो चलो चलो, गारंटी, गारंटी। हाँ, अभी आएगा मजा बेटा, 7 नंबर। चलो करो 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 करो, सॉल्व करो सॉल्व करो। देखो देखो क्या हुआ। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बताइए। पुढचे कर म्हणा, दे म्हणावं त्याला। सिंगल गॅरंटी।
चलो बेटा, मेरे सामने मेरे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, इसीलिए ये हंसी मजाक चल रहा है थोड़ा। तो वैसा कुछ नहीं, मतलब जिसको ताना मारना था उसको समझ में आ गया। पर अपने तो अपने होते हैं। ओके, चलिए। ड्यूरिंग 2004-5 enterprise A gives guarantee, bada guarantee, if I have taken a loan, so someone gives on behalf of me guarantee to the bank. So here, entity A gives guarantee. So for entity A, whether there is an obligation, but obvious no. So C, whose financial condition at that time is sound. During 2005-6, 5-6 means starting from 1 April 2005. On 30th September, enterprise B's financial condition deteriorates. Deteriorates means going down. Conditions खराब हो गई बेटा, खराब दिन आए, बुरा वक्त आया, deteriorates. And 30th September 2005, entity B goes into liquidation. Entity B goes into liquidation. So friends, up to 31st March 2005, now ask to yourself, sir, chitra. Start. Ask to yourself. माधव बहुत खुश दिख रहा है आज बेटा, सैटरडे नाइट है। ओके, क्या माधव, क्या बात है, आज कुछ तो है। ओके, तो start. Present obligation. You ask to yourself whether there is a present obligation. No. There is possible obligation. Possible obligation. If B company doesn't pay, A will pay. Okay. So my obligation, no present obligation. Possible obligation. Yes. Remote, no. Very rare chances, no. If company B doesn't pay, I have to pay. So disclose as a liability. Now you got the example. Present obligation or possible obligation. Here it's a possible obligation. And no remote. रिमोट मतलब बहुत नहीं, ए ने नहीं पे किया, मुझे तो पे करना पड़ेगा, सो मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये अभी मैं डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. नाउ अंडरस्टूड? इजी, इजी छे. द ऑब्लिगेटिंग इवेंट is giving the guarantee. What is the obligating event? Giving the guarantee, and which gives rise to an obligation. So obligating event is that I have given a guarantee. Suppose if I am a company, I am giving a guarantee to B company on behalf of B company to bank. Sorry. Probable outflow is no. Possible outflow. Probable, no. Possible. And if possible outflow, you will record it as a contingent liability unless B ka position is very good. Okay, if B ka position is very good, B is very strong financially. In that case, it's a remote. Okay, in that case, it is a remote. But beta, see, on the safer side, it's better to record it as a contingent liability. And contingent liability, we are not passing any entry. We just disclose in the books that we have given a guarantee. Okay, no entry for that. We just mention it in the notes to accounts. तो वापस से प्रोविजन की एंट्री होगी. प्रोविजन की एंट्री P&L को डेबिट और लाइबिलिटी को क्रेडिट होगा, पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री नहीं होगी सर. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा. सो राइट डाउन इट इन योर 100 पेजेस बुक. कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज ओनली डिस्क्लोज इन notes to accounts.
contingent liabilities only disclosed in notes to accounts. Yes. So remote means if this condition is good, it's strong, then your liability is remote. आपको पता है भाई बी तो बहुत पैसे वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। पर जब बी का टेंशन का काम है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तब तक जब तक बी अच्छे से चल रहा है तब तक कोई बात नहीं, यू विल रिकॉर्ड इट एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। पर 31 मार्च 2006 को क्या हो गया? यस, नरम गरम पोजीशन थी बी की और वो बन गया इंसॉल्वेंट। उसने पैसा बंद कर दिया देना, उसका दिवाला निकला है बी का। तो वो केस में क्या होएगा? अभी एक चीज लाइबिलिटी बनेगी रे, तो ए का क्या हो जाएगा? एक की बनेगी कंटिंजेंट लाइबिलिटी की लाइबिलिटी। ओके। सो किसी को गारंटी देना भी बहुत डेंजरस है रे। ओके, आया समझ में? एकदम इजी, एकदम इजी। हाँ जी ऋतुराज, मराठी में उसको बोलते हैं जामींदार। वेरी गुड बेटा। यस, जय महाराष्ट्र बेटा। ऋतुराज पूरा मराठी में लिख रहा है आज। हाँ जी। सो 31 मार्च 2006 को जय पटेल सिर्फ एक ही कमेंट डालता है, यस सर, यस सर, यस सर। तीन तीन बार एक ही कमेंट। 31 मार्च 2006 को क्या होएगा? The obligating event is giving the guarantee. Yes. And reason? Legal obligation आ चुका है sir. And outflow of resources embedding economic benefits is required to settle the obligation. Yes. Now it is probable नहीं, अभी तो भरना ही पड़ेगा 100%. A provision has to be made for the obligation. These examples deals with a single guarantee. If enterprise has a portfolio of similar guarantee, it will assess the portfolio and see whether it is probable. Okay. And if government enterprise gives guarantee in exchange of fees, I will give guarantee, but I will collect fee from you. But in that case, recognize fee as income, revenue recognition. You already know what is revenue recognition. Okay. Illustration number R. बेटा अभी एक ब्रेक ले लेते हैं मुझे लगता है, क्योंकि क्या है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा नहीं तो। प्लीज वॉच गुरु मंत्र सीरीज कंटिन्यूअसली एंड डोंट ओनली वॉच, रिकॉल इट। गुरु मंत्र सीरीज जो है उसको रिकॉल कीजिए। ओके। तो गुरु मंत्र सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, उसको अच्छी तरीके से रिकॉल कीजिए बेटा। हाँ। और संडे इज रिवीजन डे, तो आप संडे को बेटा गुरु मंत्र सीरीज नहीं होगा। सो अदर देन संडे ऑल डेज को गुरु मंत्र सीरीज होएगा बेटा। माधव, यस आई नो ब्रेक लेना नहीं आपको, बट ब्रेक लेना पड़ेगा बेटा। आई रियली एंजॉय राइट नाउ, बराबर है बेटा। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी 8 इलस्ट्रेशन कितने करने हैं, अभी खत्म होने पे आया बेटा। ऑलमोस्ट 3 इलस्ट्रेशन बजे। ठीक है, चलिए। सो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल मीट एट 7:35। 7:35 को आ जाते हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं।
Yes. Chalo. So let's start. A court case. Very interesting example. After wedding in 2004-5, 10 people died. Oh, wedding example, beta. 10 people died, possibly as a result of food poisoning from the products sold by the enterprise. Okay. So friends, 10 people died. Here, legal proceedings are started seeking damages from the enterprise, but it disputes liability. Up to the date of approval of the financial statement for the year ended 31st March 2005, the enterprise lawyers advise that it is probable that enterprise will not be found liable. It will not be liable for any guilt. However, when the enterprise prepared its financial statement for the year ended 31st March 2006, its lawyer advised that owing to development in the case, it is probable that enterprise will be liable. Friends, here there are two scenarios. On 31st March 2005, you ask to yourself, what is the present obligation? No present obligation. It's a possible obligation. On 31st March 2005, lawyers advise probable not be found liable. But on 31st March 2006, probable that it will be found liable. Friends, on 31st March 2005, financial statements were approved, but no present obligation as a result of past events. There is no obligation, friends. Remember, no provision is recognized, but it will be disclosed as a contingent liability because it's a possible obligation and not the present obligation. Friends, it's a possible obligation, but not the present obligation. Remember. So here, you have to understand there will be no present obligation. But here it is a possible obligation. So this example is of possible obligation. Okay. But when it is probable, then beta provision is recognized. Provision is recognized. So 2005 को बेटा ऑब्लिगेशन आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, पर लॉयर ने बोल दिया नहीं आएगा. लॉयर इज एक्सपर्ट पर्सन, वो नहीं बोल रहा है तो बेटा नहीं आएगा. ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे. तुम नहीं बोल रहे तो क्यों आएगा भाई? पर जिस दिन लॉयर ने बोल दिया कि आएगा, लॉयर ने क्या बोल दिया? आएगा. तो फिर हमें समझ के चलना पड़ेगा. आया समझ में? तो यू हैव टू चेक 31 मार्च 2005 को ऑब्लिगेशन है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन.
and read the answer also. Though both cases, बेटा आराम से पढ़िए. 9 number, 9A and 9B. Refurbishment. चलो. Yes. Anyone? Yes, beta. Given a sufficient time. Today I'm going very slow, slow, slow. See, beta. Furnace has lining that needs to replace every 5 years for technical reason. At the balance sheet date, the lining has been used for 3 years. Refurbishment. Refurbishment means
रिनोवेशन इन सिंपल लैंग्वेज, रिनोवेशन, नूतनीकरण, नया करना, रिफर्बिश. A furnace has lining that needs to be replaced every 5 years. बेटा, फर्नेस लाइनिंग, लाइनिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइनिंग? लाइनिंग मीन्स यू कैन कॉल इट एज हीटिंग से प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीटिंग. Because furnace, that is consist of ceramic, I think, because we know we have a furnace in our restaurant. So I know this furnace means भट्टी. आप सिंपल बोल सकते हो. तो हम लोग रोटी करने के लिए बेटा फर्नेस जो होता है वो यूज करते हैं, तो वो भट्टी जिसको बोलते हैं. तो ये फर्नेस मतलब बड़े फर्नेसेस है. तो उसको हमें लाइनिंग करना ही पड़ता है. लाइनिंग करना मतलब उसको साइड से उसको लेवल कर लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी वेज होटल होगा तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, उसको घी वगैरह से लेवलिंग करते हैं उसको. और नॉन वेज होता है तो बेटा वो अंडे से पूरा का पूरा भट्टी को, तंदूरी भट्टी जो होती है रोटी सेकने के लिए, तो वो भी एक फर्ने भट्टी है वो. तो ये बड़ी फर्नेस जहाँ पे बड़े बड़े और इसमें रहती है, तो बेटा उसको लाइनिंग करना जरूरी है. नहीं तो कैसा, वो फिर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. ओके, you can't absorb heat, beta. That furnace can't absorb heat. So we have to do lining for that furnace. You got the concept because it's a technical term. Okay. So you can Google it. You can see that the furnace lining. So it will be easy for you. And you have to replace it after every 5 years for a technical reason. Yes, you should replace it. But see, if I change the furnace only, I don't think that I will change it because we are not aware about that refurbishment, whether there will be a present obligation. No. No provision is recognized. The cost of replacing the lining is not recognized at the balance sheet date because no obligation to replace lining exists independently of the company's future action. Even the intention to incur the expenditure depends on the company to decide with the same furnace or they want to replace this lining. So if I take a decision that I don't want to continue with that furnace, मैंने अब भी भट्टी बदल दिया, पूरा क्रैक कर दिया और नया भट्टी लिया, स्टील का भट्टी लिया. So now I don't want to relining that भट्टी or furnace, so we changed it. So it's my decision, no, whether I want to continue with the same furnace or I will change only the lining part. So this is not clear in the third year. So in third year, there is no obligation. Why I should provide for that lining expense? No, that is the provision. That is not mandatory. It's my decision. So if it is my decision, then beta, no obligation arises. Okay. So refurbishment cost, but obvious. You should not do what? We are not aware about the decision. तो हम लोगों को पता नहीं है कि we'll do with the lining or not. हाँ जी बेटा, एक्सपीरियंस पर्सन दिव्या कुमारी जी, आप बोल सकते हो. ओके. फिफ्थ ईयर में फिर तो बदल ही देंगे ना, फिर तो डिसीजन ही आ जाएगा. तो फिफ्थ ईयर में हमें पता चल गया तो देन विल डू दैट प्रोविजन. ओके, यस. हीट रे, हीटिंग नहीं, हीटिंग, हीटिंग. ओके, मैथीन, हाँ, इट्स HEATING, नॉट हिटिंग. हिटिंग नहीं, हीटिंग. हीट, फर्नेस में हीटिंग होता है क्या? चलिए, ओके. चलो. सर प्लीज टेक मॉड्यूल 3. अच्छा, मॉड्यूल 3 मीन्स आई थॉट कि बेटा इट्स नॉट इन माई हैंड. बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू फीडबैक्स, फीडबैक्स एंड फीडबैक्स, फीडबैक्स देते रहो अच्छे खासे. ओके. नेक्स्ट, रिफर्बिशमेंट.
An airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. Same example, company's future action, they might sell it. So there is no legal requirement and no obligation, no future actions. So no need of any provision. Okay. So here we have finished with the furbishment. And now you only read the question number 10, onerous contract. Yes, first read it and then I will explain it. Okay. चलो explain करता हूं मैं, पहले read करो. Now we are at the end of this chapter. Over. See, what is onerous contract? Write down in study 100 pages book. Onerous contract. Yes, you can write it. I will write the definition for you. Write down. Onerous contract. Unavoidable cost of meeting obligation exceeds economic benefit expected to be received. Conclusion. Outcome enters. Outcome turns into loss. Outcome turns into
laws. Okay. So friends, if your cost for meeting the obligation, it exceeds economic benefit to be received. So what is the example? An enterprise operates profitably from a factory it has leased under the operating lease. Lease, I think you are aware because we already covered it. Operating lease means it's simple like rent. During 2005, enterprise relocates. Enterprise relocates in a new factory. The lease on the old factory continues for next 4 years. It cannot be cancelled and factory cannot relate to another person. Okay. Factory cannot relocate to it cannot be cancelled, sorry, and the factory cannot be relate to another person. So you cannot give it to another person. Okay. Now, friends, you have to relocate to new factory. For example, I'm giving you one example. Sanket sir has taken one premises on rent from Mona ma'am. Mona ma'am is the third person, I assume. Mona ma'am put condition. Sanket sir, I'm giving you that premises on rent only because you are Sanket sir. Okay, very simple example. Because I can trust you and I know you are in expansion stage. So this premises is of 100 students. I am giving these premises only to Sanket sir. And I am giving these premises only at 20,000 per month. Though market rent is 30,000. But we know Sanket sir is a genuine person. He's a gem. He is running this activity at very low cost. So sir, you are doing something better for society. So Mona ma'am told me, yeah, I'm giving you these premises at 20,000 only. Though market rent is different, but you are doing some social activity. Normally fees are very high in private classes. But Sanket sir, you are charging only 2,500, 3,500 rupees to students. So sir, we are giving these premises at very low cost. But sir, condition is there. You cannot give. I'm not giving this premises to any other person. And I'm making a contract of 3 years, non-cancelable contract from both sides. Both sides. So 3 years contract and it is non-cancelable. And one more point, you cannot sublet to any other person. I want only Sanket sir in this premises. I agreed. 100 students capacity. I started with only 10, 15 students. And beta, due to your, blessings, in 6 months, I got admission more than 500 students. Mona ma'am's premises, it's of no use now. But I cannot cancel the contract. I shifted to other premises, having a capacity of 500 students. But still I am paying that rent without getting any benefit because I shifted to 500 students capacity hall. But friends,
I cannot cancel that contract. And Sanket sir is now taking classes of 500 students. And that premises of Mona ma'am is now vacant from last 1 year. Now tell me whether I'm getting any benefit out of that property. No. But still I'm paying every month 20,000. But I'm paying that amount only because she made a contract with me and she's the first person in my life who has given the premises on the rent at very low rate, and she helped me to reach up to 100 students, but it's now we move to 500 students. And that's why I'm paying rent for, and it is non-cancelable contract. And therefore, beta, that 20,000 is my unavoidable cost, and I'm not getting a single amount from that 100 students premises. एक बार हिंदी में बता देता हूं. मैंने मोना मैम से एक जगह लिया बेटा. मोना मैम इज अ थर्ड पर्सन जो मेरे लाइफ में अभी नहीं है, ऐसा एज्यूम करेंगे. शी इज नॉट माई वाइफ, वो मेरी वाइफ नहीं है, शी इज अ थर्ड पार्टी. मैंने मोना मैम से एक जगह लिया. मोना मैम ने बोला, संकेत जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट के क्लासेस रन कर रहे हो जो बहुत कम पैसों में आप लोग रन कर रहे हो. 2,000 2,500 आज प्राइवेट क्लासेस में 15,000 फीस है, और आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हो बहुत कम पैसों में, तो आपको मैंने ये प्रीमाइसेस 20,000 रुपए में दे दिया. आज इसकी वैल्यू मुझे 35,000 मिल सकती है, पर संकेत जी मैं सिर्फ आप ही को ये प्रॉपर्टी दूंगी, और वो क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, पर आपको 20,000 रुपए में. पर एक बात है कि 3 साल के लिए मैं जा रही हूं यूएस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा. आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना. मेरी शुरुआत थी, मैंने हाँ बोल दिया. मैं बोला 20,000 तो मैं कमा ही लूंगा. मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली. उन्होंने बेंचेस भी डाल के दिए. शी इज वेरी गुड बाय नेचर. क्लासेस चालू किए, आपकी दुआओं से क्लासेस बढ़ गए. एग्जाम्पल है ये. पहले 10-15 बच्चे आ रहे थे, बच्चे बढ़ते बढ़ते 50 हुए, 100 हुए, लाइन लग गई, 500 बच्चों की एडमिशन हो गई, प्रीमाइसेस छोटी गिरी, मैं वहां से शिफ्ट हुआ. पर एक वादा किया था 3 साल का, वो नहीं तोड़ सकता हूं. 20,000 रुपया हर महीने देना है, जहां से मुझे आउटपुट. और उन्होंने एक हाँ वादे में एक बात भी मेरे से प्रॉमिस भी लिया था, सर क्या मेरे बिठाए हमने, संकेत सर ही प्रीमाइसेस में पढ़ाते हुए दिखने चाहिए. यदि आपने किसी को बेईमानी की और किसी और को दिया तो संकेत सर आपने वादा तोड़ दिया, और ये बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. फिर मैं आपको रेंट लगा दूंगी 70,000 पेनल्टी में, वो भी 2 साल तक भरना पड़ेगा पेनल्टी. मैं बोला भाई रहने दो, मैं खुद नहीं सिखाऊंगा और उधर किसी को सिखाने भी नहीं दूंगा. 20,000 रुपया हर महीने का ईमानदारी से दे दूंगा. और वहां पे 500 बच्ची की क्लासरूम मैंने अलग ले ली. वहां पे भी एक मोना मैम जैसी भली लड़की औरत मिली, एज्यूम करते, वो भी प्रीमाइसेस चल रहा है 500 लोगों का. इंशाल्लाह और प्रीमाइसेस अच्छा चलेगा तो 1,000 बच्चों की कैपेसिटी वाला ले लेंगे, बाद में देखेंगे, वो तो फ्यूचर है. एग्जाम्पल है बेटा, मन पे मत लियो. तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ये मेरी कितनी हुई, 20,000 रुपया. हर महीने मोना मैम के अकाउंट में 20,000 जाएगा. बेनिफिट 0, क्योंकि मैं वो प्रीमाइसेस यूज ही नहीं कर रहा हूं. 100 बच्चों की कैपेसिटी, 500 कहां से बिठाऊं उसमें. तो बेटा इसको बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे बेनिफिट 0. ओके चलिए, ओके. तो आई होप यू एंजॉयड दिस एग्जाम्पल. अरे वाह, चलिए. So here, now you are clear with the example of onerous contract. Rent, I have to pay 20,000 mandatory, and economic benefit is 0. वाह रे वाह सर जी, क्या एग्जाम्पल है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन,
अरे ऑब्लिगेटिंग इवेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ने तो सब बर्बाद कर दिया. Becomes binding on the enterprise. Okay. Which gives you legal obligation. Now, but a partial obligation is not there. It is one-sided obligation. So, onerous contract, you have to make a provision. If it's 50-50, one can leave anytime. And if there is no burden, so beta, it is exception. So, no need of provision. So, that is executory contract. That is executory contract. You can leave the contract. आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी छोड़ के जा सकते हो. ओके. तो when the lease becomes onerous, an outflow of resources impeding economic benefit is probable. तो बेटा conclusion, you have to make a provision. Provision करवी पड़े रे, करवी पड़े. केम? बहुत simple reason है. Because it's unavoidable lease contract. And you will make the best estimate of it. And you will make the provision of it. Okay? Easy है? एकदम easy? Yes, sir. So here we have finished with all examples. I think one more example I will take from the study material. I hope you enjoyed till now. And let's see, are you revising it properly or not? Let's see. Chalo. क्या हुआ रे? हाँ जी. चलो, let's revise it. Warranty, provision. Obligating event, sale. Second one, contamination line, provision, virtually certain. Word याद करना है. Offshore oil field, 90% provision. अवंतिका क्या क्वेश्चन पूछा रे बेटा तूने? बेटा अवंतिका, I didn't get your question. Refund policy, provision because of good relations. That is a constructive obligation. Legal requirements of smoke filters, penalty provision. Only penalty provision. You remember. हाँ जी बेटा, 20,000 multiplied by number of months. S15 employee benefits we are going to do. Single guarantee, contingent liability. Court cases, contingent liability. Refurbishment, no provision. No provision. Onerous contract, provision. An executory contract, no provision. Chalo beta. So we are done with this standard. And let's see now what is the part which is remaining beta. हाँ जी, एक बार पीपीडी देख लेते. सो पीपीडी में से याद कर लेंगे. कंटिंजेंट लायबिलिटी भी हो गया है. थोड़ा सा भी फास्ट करेंगे. I hope you enjoyed. And it is not in the control of the enterprise. The definition part. A present obligation. So this is रट्टामार. हाँ, ये लिखो बेटा, ये रट्टामार definition है. Yes, you write this definition in the same way and tell me over. There are two definitions, possible obligation and see, this is the actual definition. Is it easy, beta? Accounting standard 29. Write down over. After writing this definition, write it properly. This is definition 1. This is definition 1. Write it properly, beta. This definition. Don't take only screenshots. Write it in your 100 pages book. I'm waiting for you. And write down definition 1 over in comment section. Definition 1 over into comment section.
मस्त 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 लिखो एकदम, फटाफट लिखने का बेटा, जल्दी जल्दी लिखने का। मजा आ भी गई आज, मजा आया बेटा आज। चलो ओवर, लेट्स मूव लेट्स मूव लेट्स मूव। डेफिनेशन टू, डेफिनेशन टू, दिस इज ऑलरेडी रिटर्न ओवर देयर। ये चलो रे, लिखो जल्दी जल्दी, राइट डाउन डेफिनेशन टू ओवर। ए कल का सेशन मिस मत करियो, संडे है। ओवर क्या बेटा, चलो। नाउ कंटिंजेंट एसेट, सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन बेटा, ओनली पॉसिबल ऑब्लिगेशन के बदले में पॉसिबल एसेट। यू कैन राइट सेम डेफिनेशन वन, ओनली पॉसिबल ऑब्लिगेशन रिप्लेस बाय पॉसिबल एसेट। डोंट राइट डेफिनेशन, डोंट राइट डेफिनेशन। अरे करिए बेटा करिए, फटाफट करवानो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन रिप्लेस्ड बाय पॉसिबल एसेट। Present obligation, you know. Past event, you know. Probable outflow also, you know. Provisions. Provision, if all conditions are satisfied, you make a provision. Measurement based estimate before taxes discontinuation. Yes. Book value, but IFRS provision has to be. Yes. You are aware about this.
Decision tree also, beta, you are aware about decision tree. You can write this decision tree, beta. Take screenshot and you can write it afterwards. Yes, screenshot ले लीजिए. Take a screenshot. ले लिया डिसीजन. चलो ओवर थोड़ा सा ही बचा है. Yes. Contingent asset बेटा, we disclose it in the director's report. हाँ, contingent assets का लिखना disclose in the director's report. Provision की entry होती है, contingent liability को disclose करते हैं notes to accounts में, and contingent assets. Contingent asset means बेटा, suppose if I file a suit against you, and suppose if I think I am going to win that case, and I will receive 1 lakh rupees from you, so that is my contingent asset. It depends on the court order. तो suppose मैंने आपके अगेंस्ट केस किया और मुझे लग रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, मैं जीतूंगा, तो वो मेरे लिए हो जाएगा कंटिंजेंट एसेट. और कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया जाता है, वो भी डायरेक्टर रिपोर्ट में. किधर? डायरेक्टर रिपोर्ट. नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में. रीड दिस क्वेश्चन. Z Limited commenced a legal action against Y Limited, claiming substantial damages for supply of faulty product. The lawyers of Y Limited advised that company is likely to lose the case. Also, the paying the claim is not remote. तो केस की फीस है, लीगल कॉस्ट 50,000 and settlement if claim is required to pay, what is the amount? Correct answer is create a provision of 50,000 and disclose the contingent liability 5 lakhs. A possible obligation that arises from the past event, not only. Definition is a contingent liability. Answer is contingent liability. X company is a business that sells a second-hand car. Fault within 30 days of the sale. Repair free of charge. X company made a provision of repairs 20,000 and calculated the provision should be 20,000. Reverse कीजिए. Credit of 5,000. P&L के credit में 5,000 डाल दो. So P&L के credit में 5,000. Provision के लिए best क्या है? Is a liability of uncertain timing or amount. Already covered. Thank you. 4 questions थे स्टडी मटेरियल में, वो भी ले लिए. नाउ कोई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बचा है क्या, देख लेते हैं. कुछ. Yes, now you can read these questions. इजीली आपको आ जाएगा. हाँ, ऑयल कंपनी का एग्जांपल हुआ है. ओके बेटा, नाउ यू रीड स्टडी मटेरियल क्वेश्चन थरली. आप लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आज थरली रीड करके आओ. टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू S15 इन डिटेल. Please don't miss tomorrow's session, and last के 10 minute I will take all these illustrations of S29 because I want you should read it from the study material, every one of you, and tomorrow I am going to discuss all these answers. So आप लोग कल
अच्छे से करके आना S29. Please don't miss tomorrow's session. It's very important. It's a request to all of you. चलिए बेटा, ओके. कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है, ओके. और कर लीजिए बेटा अच्छे से. कल मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 इज वेरी डिफिकल्ट. प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय. टेक केयर. गुड नाइट.